India. Saurabh Jha this side trying to crack neat once again in last 30 days, जैसे कि हमने पिछली बार भी किया था। 3 साल बाद फिर से दोबारा हम इसी ट्रैक पे हैं, क्योंकि कुछ रीजंस हैं, उनको मैं बाद में डिस्क्लोज करूंगा। चलिए अभी शुरू करते हैं। तो बात कर रहे हैं अभी 30 डेज की। बाय द वे, दिस इज डे 1 ऑफ दोज 30 डेज। दिस इज अप्रैल 1 एंड द रिसोर्सेज विच आई विल बी यूजिंग इज सोली उत्थान सीरीज ऑफ फिजिक्स वाला। अनडाउटेडली वो सबसे ज्यादा फास्ट एंड शॉर्टेस्ट तरीका है क्रैक करने का एग्जाम। और उसके बाद हम देख रहे हैं एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइंस जो उठकर आती हैं एग्जाम्स में। ठीक है, इन दिस 30 days I will be completing 5 tasks every day. उस टास्क में क्या क्या होगा? बायोलॉजी फर्स्ट, देन इनऑर्गेनिक, देन फिजिकल केमिस्ट्री, देन ऑर्गेनिक, देन फिजिक्स, वही 5 सब्जेक्ट्स। एंड उसके बाद हम लोग अपना जो ब्लूप्रिंट है उसके ऊपर चलते चलते ही पूरी जर्नी को तय करने वाले हैं। आई हैव ऑल ब्लूप्रिंट रेडी, सारा कुछ मैंने रेडी कर रखा है जिससे मेरे को ट्रैकिंग में दिक्कत ना आए कोई, सबसे पहले। ठीक है, और शेड्यूल, स्ट्रेटजी, सब कुछ रेडी है। तो वी आर प्रीटी मच रेडी फॉर इट। ओके, this was a brief introduction about me, about who I am and why you should follow me. If you haven't subscribed yet, please do subscribe because your one subscribe means a world to me. अंत में यही आपसे गुजारिश रहेगी कि अभी तक यहाँ पर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड लाइव स्ट्रीम्स के साथ जुड़ने के लिए डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर ट्रेज हसल द डे 1। चलिए बायोलॉजी से शुरुआत करते हैं। अभी फिलहाल गरम गरम दूध आ गया है, मम्मा ने दे दिया है, तो वो पी लेंगे, पानी पी लेंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो चलिए एडजस्ट करते हैं कैमरा का पोजीशन। अगर भैया, अगर अभी तक आप सुबह उठ के नहीं पढ़ रहे हो देन आप क्या कर रहे हो मुझे तो पता नहीं। सुबह उठ के पढ़ना चालू करो भाई, सुबह उठ के योगा किया करो, पढ़ा करो और अपना काम धाम देखा करो यार। कोई भी नहीं है आज से स्कूल भी ओपन होते हैं ना, 1 अप्रैल वाले दिन से। अप्रैल फूल बनाते हैं स्कूल वाले बुला के, क्योंकि स्कूल में तो कुछ पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं है, सारा कुछ तो पढ़ना होता है अपन लोगों ने कोचिंग से। तो वो 1 अप्रैल को स्कूल शुरू करते हैं और हमको अप्रैल फूल बनाते हैं। डायरेक्टली अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चंस शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या आने वाले हैं एग्जैक्टली पहले क्वेश्चन ही आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन से ही शुरुआत करनी चाहिए। So we have questions here. If you have any doubt about neat or you have any query about me in your mind, then you can comment. If you will comment, then I'll reply in between. ठीक है, तो अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? फिजिक्स वाला। Because this is the best platform ever. किधर गया? हाँ, अरे क्वेश्चन करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है क्या?
क्वेश्चंस करने का ऑप्शन तो अब आएगा। माय बैचेस आ गया। फटाफट से बॉटनी लें कि जूलॉजी लें यार, इसमें तो बॉटनी और जूलॉजी का अलग अलग दे रखा है। फॉर एग्जांपल देखिए, बॉटनी एंड जूलॉजी, फोकस नहीं कर पा रहा क्या। बॉटनी एंड जूलॉजी अलग अलग दे रखा है, तो कौन सा चूज करें यार। मैंने तो बायोलॉजी का सोचा था। बॉटनी, जूलॉजी, चलो यार इतने दिनों बाद पढ़ रहे हैं तो जूलॉजी से ही स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कैसी है अपनी ग्रिप जूलॉजी पे। नहीं, जूलॉजी छोड़ो, फिलहाल प्रैक्टिस करते हैं बॉटनी से ही। चलो शुरू करते हैं, काफ़ी दिनों बाद बॉटनी पढ़ेंगे। तो कितने क्वेश्चंस लें, 90 क्वेश्चन ले क्या? 90 क्वेश्चंस लेते हैं। स्टार्ट प्रैक्टिस। 90 क्वेश्चन का शुरू हो चुका है काउंट डाउन। 90 क्वेश्चंस आर सेट। अब यहाँ पर हम वन बाय वन आंसर करेंगे इन सबका। मैं आपसे पूछता जाऊंगा, अगर आपको आता होगा कोई, यू कैन सिंपली कमेंट डाउन बिलो। हाँ, अगर हमको कुछ नहीं समझ आ रहा तो हम डायरेक्टली रेफरेंस ले लेंगे और उस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे, ताकि वो पूरा एक्चुअल में कैलकुलेट ना हो। ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ आएगा डायरेक्टली वी विल refer to a book because we don't have much time. Read the four statements A to D. In transcription, iodine pairs with the uracil. Transcription क्या होता है? Transcription is a process of formation of proteins. No, that is translation. Transcription is a process of forming RNA from DNA. Uracil biology 11th. For little rough work, we need a notebook. 80 GC. टी की जगह यू होता है ना, यूरेसिल होता है ना आरएनए में, तो वो तो अंडरस्टूड ही है, तो ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरेन बाय रेप्रेसर is referred to as positive regulation. This I forgot. Regulation of lac operon. Lac operon का रेगुलेशन ये अच्छे से पढ़ना है। The human genome has approximately 5,000 genes. Hemophilia is sex-linked recessive disease. Yes, hemophilia is sex-linked. D is true and A is true. But I don't know the B and C are true or not. Let's say it's 2. Yes, it's correct. देखो, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। ठीक है, और उसके बाद हीमोफीलिया इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। पता ही है हमको, रॉयल फैमिली डिजीज है हीमोफीलिया, रॉयल फैमिली डिजीज।
तो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट। तो नेक्स्ट question consists of two children each printed on instruction and reason while answering. Zone of maturation is proximal and distal. Proximal आगे वाला एंड, डिस्टल एंड पीछे वाला एंड। जोन ऑफ मैच्योरेशन, हाँ बिल्कुल सही है, ए इज ट्रू। जोन ऑफ मैच्योरेशन is proximal to zone of elongation. Maturation zone of roots provides water to plant. Maturation zone of roots. I'm not sure about this. So just mark plant anatomy. Plant anatomy is weak. I don't know the answer. Okay, we can have a read. Cell division. Cell division. Chromosome is counted by centromere. One centromere is equal to one chromosome. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे क्रोमोसोम बनाते हैं ना, तो ये बीच में क्या होता है, ये सेंट्रोमियर होता है, ठीक है। बीच में अगर ये क्रोमोसोम है तो बीच में ये बनाते हैं, ये सेंट्रोमियर होता है, ये सेंट्रोमियर होता है, ठीक है। एक सेंट्रोमियर जो होता है वो एक क्रोमोसोम होता है। अगर फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ क्रोमोसोम होता है, काफी बार देखा है ना हमने सेल साइकिल चैप्टर में, ऐसे क्रोमोसोम बनते हैं, दो दो क्रोमोसोम ऐसे ऐसे बनते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये जो ऐसा क्रोमोसोम होगा बड़ा वाला जो मैंने बनाया, इसमें भी एक सेंट्रोमियर है, इसको भी एक क्रोमोसोम बोलेंगे और इसको भी एक क्रोमोसोम बोलेंगे, ठीक है। और इसको भी एक ही क्रोमोसोम बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये गिनते हैं, ये बीच वाला सेंट्रोमियर गिनते हैं। ये बीच वाला जो सेंट्रोमियर है वो अगर एक होगा तो एक ही क्रोमोसोम गिना जाएगा, ज्यादा क्रोमोसोम नहीं गिने जाएंगे। मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है यार, सेल डिवीजन वाले चैप्टर में बोलता है कि डीएनए कंटेंट डबल हो गया, क्रोमोसोम उतने ही रह गए। तो कैसे डीएनए, ये देखो मैं आपको सीधा सीधा बताता हूं, इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, डीएनए कंटेंट तो डबल हो गया, ये था पहले और ये बाद में, डीएनए कंटेंट तो डबल हो गया इधर से इधर जाते हुए, पर जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम तो दोनों में एक ही है ना, क्योंकि इधर भी एक सेंट्रोमियर है, इधर भी एक सेंट्रोमियर है। क्रोमोसोम क्या होता है, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर 1 है तो हमारे पास क्रोमोसोम भी एक ही है, पर यहां पर जो कंटेंट है डीएनए का वो क्या हो गया, डबल हो गया, वो क्या हो गया, डबल हो गया। तो इस तरीके से हम लोग
इसको देखते हैं, ठीक है। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बट ये लेटर ऑन मेरे को भी मतलब अब जाके पता लगा है। द सेल साइकिल ऑफ लाइफ cell division is more complicated process in eukaryotic than prokaryotic cell, ये तो पता ही है। Have multiple chromosomes and many organelles, all of which must duplicated and separated from the cell to divide. Cell cycle, the sequence of the events by which a cell duplicates its genome. The sequence of events by which the cell duplicates its genome, synthesizes other cell constituents and eventually divides into two daughter cells are known as cell cycle. इतनी भयंकर डेफिनेशन दे दी गई है यार। ठीक है, चलते हैं आगे। The events of cell cycle are under genetic control. The events of cell cycle are genetic control. Genetic control के अंदर होते हैं सेल साइकिल्स के इवेंट। जीन्स जो चाहते हैं वैसे ही सेल डिवीजन होगा। अगर जीन्स चाहते हैं सेल और बने, तो जीन्स का हुक्म सर आंखों पर, तो सेल और बनेंगे। जीन्स चाहते हैं कि सेल नहीं बने, सेल ग्रोथ रुक जाए, तो हमारे सेल ग्रोथ रुक जाएगी। तो जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ और स्टंटेड ग्रोथ। मतलब जीन्स जिसके ज्यादा बढ़िया रहेंगे, ग्रोथ ज्यादा बेटर, ज्यादा सेल डिवीजन, जीन्स जो चाहेंगे वही होगा। Phases of cell cycle में क्या आएंगे? Duration of cell cycle varies from organism to organism and from cell to cell. Duration of cell cycle varies from organism to organism and ये तो पता ही understood है। Duration of cell cycle in human is 24 hours and yeast 90 minutes. Understood? Cell cycle constitutes of two phases: interphase, M phase, non-dividing phase and dividing phase. Interphase, interval between the two successive cell divisions, prepare a cell for a division longest period of and occupies more than 95% of the duration of the cell. (95% से ज़्यादा duration of cell cycle is interphase, in which the cell grows itself to a level after which it decides to get divided. 46 chromatids and 46 chromosomes. अब ये देखिए, अब सीधी सीधी बात है, मैंने आपको बोला था ना, ये देखो, अब जो क्रोमोसोम है उसको वो आप किसको बोलोगे? एक क्रोमोसोम मतलब एक सेंट्रोमियर। ये इतना ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना। ये देखो, ये एक सेंट्रोमियर है ना, एक सेंट्रोमियर, इसको एक क्रोमोसोम बोलेंगे। और ये दूसरा, ये एक सेंट्रोमियर है, इसको एक क्रोमोसोम बोलेंगे। ये एक सेंट्रोमियर है, इसको एक क्रोमोसोम बोलेंगे। अब जब बोलते थे ना हम लोग कि डीएनए कंटेंट तो डबल हो गया, इसमें क्या हो रहा है, यहां से जहां जाने में डीएनए कंटेंट तो डबल हो गया, लेकिन क्रोमोसोम कितने रहे? एक ही क्रोमोसोम रहा। क्रोमोसोम कितने रहे? एक ही क्रोमोसोम रहा। क्यों? क्योंकि यहां पर भी एक ही सेंट्रोमियर है और यहां पर भी एक ही सेंट्रोमियर है। मतलब एक सेंट्रोमियर है, क्रोमोसोम तो एक ही रहेगा, लेकिन डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है। तो हम लोग उस चीज को कैसे समझ सकते हैं? सिंपली इस डायग्राम से, ठीक है। ये डायग्राम कोई नहीं समझाता है, क्लासरूम में भी कोई नहीं बताता है, बहुत रेयर बताता है कोई भी। हाँ जी, हेलो। 46 chromatids have one phase. First phase of the growth phase. Cell is metabolically active and hence prepare its DNA for application. Synthesis phase DNA
synthesis occurs, the amount of DNA per cell doubles, but the chromosome number remains same. अब देखो यहाँ पर सेम चीज आ गई ना, ये सेम चीज देखो, सेम लाइन आ गई उठ के, ये देखो, ये सेकंड वाली लाइन है ना, एनसीईआरटी में भी होगी, ये एनसीईआरटी की ही लाइंस है। इसमें लिखा है द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स, अमाउंट ऑफ डीएनए तो डबल हो गया, बट क्रोमोसोम रिमेन्स द सेम, क्रोमोसोम रिमेन्स द सेम। और यहां पर देखो, यहां पर भी मैंने वही वही चीज बताई ना, अमाउंट तो डबल हो गया लेकिन क्रोमोसोम सेम रहे, क्योंकि ये जो सेंट्रोमियर है, एक सेंट्रोमियर यहाँ है, एक सेंट्रोमियर यहाँ है, तो ये तो जब तक एक रहेगा तो सेंट्रोमियर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो एक ही रहने वाला है। DNA replication begins in the nucleus and the centrioles duplicate in the cytoplasm. The centriole duplication takes place in synthesis phase, gap 2 phase, 92 chromatids and 46 chromosomes. Cell continues to grow and prepare itself for division. Synthesis of proteins required for mitosis takes place. माइटोसिस के लिए जो प्रोटीन चाहिए उनका सिंथेसिस होता है। Genotic quiescent phase. It is the stage wherein the cell remains metabolically active but do not proliferate unless to do so. Such cells are replaced for replacing the cell lost during injury. M phase. The cell reproduces during the mitotic phase. The mitotic phase has two stages: karyokinesis and cytokinesis. Karyokinesis and cytokinesis producing the two daughter nuclei. Cytokinesis producing the two daughter cells. The mitotic phase of the cell alternates with the much longer interphase, the mitotic M phase. Interphase and M phase. ये 3 पेज का चैप्टर इतना ज़्यादा मार्क्स दिलाता है ना, इतने ज़्यादा मार्क्स दिलाता है ना। सेल साइकिल एंड डिवीजन, phases of mitosis, phases of mitosis. Mitosis and phase is divided into four stages: prophase, first stage, metaphase, anaphase, telophase. Last stage, cytokinesis completes the mitotic phase. Cytokinesis completes the mitotic phase. Cytokinesis are divided into 3 phases: early prophase, middle prophase, late prophase. Metaphase, late. Anaphase, centromere split, chromatids move to anaphase, telophase.
Nucleus less distinct. Oh, the nucleus becomes less distinct. Dehydration and coiling, dehydration and coiling, dehydration and coiling. Crystal chromatins join together by the centromere for the first time. They can be seen with a light microscope. They can be seen with a light microscope. Anaphase is simply very small. Anaphase and telophase. Nuclear Golgi complex here forms nuclear envelope resembles reassembles the chromosome cluster nucleus Golgi complex and endoplasmic reticular envelope forms chromosome clusters opposite spindle pools and their identities are is lost as discrete elements. Nuclear envelope assembles around the chromosome. Nuclear envelope assembles around the chromosomes. मिडल प्रोफेस के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं. मिडल प्रोफेस में क्या होता है, डिहाइड्रेशन होती है और कोइलिंग होती है. कंडेंस होता है, क्रोमेटिन कंडेंसेस इनटू क्रोमोसोम्स बाय डिहाइड्रेटिंग एंड कोइलिंग. डिहाइड्रेटिंग एंड कोइलिंग ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं. एंड सिस्टर क्रोमेटिड्स जॉइन टुगेदर बाय सेंट्रोमियर. फर्स्ट टाइम अंडर लाइट माइक्रोस्कोप हम देख सकते हैं, जबकि ये सब हो रहा होता है लेट प्रोफेस. Production of microtubules. Production of microtubules. For number of small cycle nucleolus degenerate. One highlight of late Professor's nucleolus degenerates.
अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज, तीनों, ये जो तीन फेजेस हैं इनमें सब कुछ डिसअपेयर हो जाने वाला है. मिडिल फेज इज इंटरेस्टिंग because in middle phase the condensation and coiling is happening, and first time the two chromatids can be seen under the light microscope. The nucleus become less distinct and the nuclear membrane has been broken down in small vesicles, and nucleolus also disintegrates in late prophase. In early prophase, astral rays, microtubule fibers, all asters, ventricle. तगड़ी नींद आ रही है, तगड़ी नींद आ रही है, पर सोना नहीं है, पढ़ना है. Splits chromosome from diplotin, parents or combination of modules, synapses. मियोसिस से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं. मियोसिस मियोसिस पढ़ते हैं फटाफट, एक बार नज़र मारते हैं मियोसिस पे. Meiosis involves the two sequential divisions, nuclear division and cell division, called meiosis 1 and meiosis 2. But only a single cycle of DNA replication. Meiosis 1 initiated after the parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatids at the S phase. Meiosis 1 initiated after the parental chromosomes have replicated to produce identical sister chromatids at S phase. Pairing of homologous chromosomes is a recombination between them. Four haploid cells are formed in the end of meiosis 2. Stages of meiosis. Meiosis consists of two divisions, meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis 1 is a reductional division and meiosis 2 is equational division. During meiosis 1, the number of chromosomes reduced by half. Homologous pairs of chromosomes get separated and cell becomes haploid. The two chromatids of the chromosomes become genetically different due to crossing over. The two chromatids of the chromosomes become genetically different due to crossover. Two chromatids. During the meiosis one, the number of the chromosomes is reduced to half. The homologous pair of chromosomes get separated and cell become haploid. The cell become haploid. Four haploid cells after the meiosis ends. Like we have this. After synthesis, we have this S phase, and then we have M1,
Meiosis one. There's haploid cells, and thereafter we have meiosis two. We have diploid cells. Four haploid cells maintains the chromosome number. Meiosis one is the most complex in prophase one, metaphase one, anaphase one, and telophase one. Prophase LZPDD.
फटाफट से मियोसिस देखते हैं यार, फटाफट से ऑब्जर्व कर लिया मियोसिस। लेट्स हैव सम प्रोफेज, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस। 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 LZPDD, 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 मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। मेटाफेज में मेटाफेज प्लेट बनेगी। और माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म स्पिंडल ऑपोजिट पोल्स। ये थोड़ा नया है, पर एनाफेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिसजंक्शन होता है, डिसजंक्शन। segregation of homologous chromosome during the anaphase one called disjunction. Segregation of homologous chromosomes during the anaphase is called disjunction. And spindle fiber shortens. Leptotene compact condensation and thickening. लेप्टोटीन में क्या है? कंडेंसेशन एंड थिकनिंग। जाइगोटीन में क्या है? जाइगोटीन एसोसिएशन ऑफ क्रोमोसोम सिनेप्सेस। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है जाइगोटीन में। पैकेटीन में क्या बनता है? पैकेटीन में होता है नोड्यूल फॉर्मेशन। अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्रॉस ओवर बोल सकते हैं, लॉन्गेस्ट फेज भी बोल सकते हैं। स्पाइरली अरेंज्ड क्रोमोसोम्स, स्पाइरली अरेंज्ड क्रोमोसोम्स इसमें दिखते हैं। इसमें 3-4 चीजें हैं। पैकेटिन इज इम्पोर्टेंट, जाइगोटीन सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के लिए इम्पोर्टेंट है, और लेप्टोटीन इज इम्पोर्टेंट फॉर द कॉम्पैक्ट एंड compaction and condensation, and zygote is important for synaptonymal complex and synapse formation, and pectine is important for crossover and appearance of recombination nodule, arranged spirally chromosomes. Crossing over is the exchange of genetic material between the two homologous chromosomes, enzyme mediated process, and involves a called enzyme called recombinase. Crossing over leads to recombination of the genetic material on the two chromosomes. Recombinase enzyme चाहिए होता है, ठीक है। फिर उसके बाद डिप्लोटीन है। डिप्लोटीन में क्याजमेटा बनता है। डिप्लोटीन इज फेमस फॉर क्याजमेटा। Diplotin is famous for chiasmata. Bivalent begins to separate due to dissolution of synaptonymal complex. Dissolution of synaptonymal complex. Synaptonymal complex टूट जाता है इसमें। जाइगोटीन में बनता है, पैकेटीन में नोड्यूल बनता है, और स्पाइरली अरेंज क्रोमोसोम्स आते हैं पैकेटीन में। उसके बाद डिप्लोटीन में क्या होता है? डिप्लोटीन में होता है क्याजमेटा बनता है, एंड सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टूटता है। Non-sister chromatids remain attached at the site of crossover. Non-sister chromatids remain attached at the site of crossover. Non-sister chromatids crossover के टाइम पे चलो इसको तो फटाफट से याद कर लिया हमने। अब चलते हैं अगले की तरफ। रूट प्रेशर। ट्रांसपोर्टिंग प्लांट है क्या?
रूट प्रेशर इज ड्यू टू। रूट प्रेशर किसकी वजह से होता है यार? ट्रांसपोर्टेंट प्लांट है क्या? रूट प्रेशर किसकी वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये कैसे क्वेश्चन है यार? आईपीएम क्या है? इन विच वन इज नॉट टेक्निक इन्वॉल्व इन आईपीएम? आईपीएम क्या होता है भाई? ये तो पहली बार पढ़ा मैंने। समर फ्लफिंग, लेट प्लांटिंग, एक्सेस यूजिंग। यार ये नया क्वेश्चन ही है कोई यार, स्किप कर देते हैं इसको। गॉड। कर गई है जादू मुंडे की तेतू काबू, छड्डे ना बिल्लो किसे कम गार दे। केड़ा कर गई है जादू मुंडे की तेतू का, मुंडे की तेतू काबू, छड्डे ना बिल्लो किसे कम गार दे। केड़ा कर गई है जादू मुंडे की तेतू काबू, छड्डे ना बिल्लो किसे कम कर दे। केड़ा कर गई है जादू मुंडे की तेतू काबू, छड्डे ना बिल्लो किसे कम कर दे। केड़ा कर गई है जादू मुंडे की तेतू काबू, छड्डे ना बिल्लो किसे कम कर दे। In grana lamella, presence of which of the following specifies Z scheme found in the grana lamellae? Z scheme, Z scheme. अरे वाह, फोटोसिंथेसिस इतना छोटा है क्या? ओ एम जी, मुगेम्बो खुश हुआ। It's so small. Let's read fast. फोटोसिंथेसिस है, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स हैं, 5 एक्सपेरिमेंट किए थे। वेयर डज द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस? कहाँ कहाँ फोटोसिंथेसिस होती है और कैसी कैसी होती है? टाइप्स ऑफ लीव्स एंड पिगमेंट्स, लीव्स कैसे कैसे होते हैं और पिगमेंट्स कैसे कैसे होते हैं? लाइट रिएक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रिक द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है? केल्विन साइकिल क्या होता है? केमियोस्पोटिक हाइपोथेसिस क्या होता है? हैच एंड स्लैक साइकिल क्या होता है? दिस इज ऑल। बस खत्म। इसमें जेड स्कीम तो आई नहीं।
जेड स्कीम कहाँ गई इसमें? हाँ ये रही ना जेड स्कीम, एटीएस में होती है ना। when the electron passes through downhill direction, the energy released, the use of ADP to ATP and NADP to NADPH, the whole scheme transferred the electron is called the Z scheme due to its shape. Photolysis of the water releases electrons that provides the photosystem too. Oxygen is also released during the process. Oxygen is also released during the process. This process, oxygen is also released during this process. ETS पढ़ते हैं. The reaction of photosystem 2 absorbs light. The reaction center of photosystem 2 absorbs light of 680 nanometer in red region, causing the electron to become excited. These electrons are picked up by the electron acceptors, which passes to electron transport system consisting of the cytochromes. Electrons are passed down to electron transport chain and then to pigment of photosystem 1. Electrons are transported to pigment of photosystem 1. The electrons in photosystem 1 also get excited due to the light of wavelength of 700 nanometer and transferred to another molecule having a greater redox potential. When the electron passes in downhill direction, it releases the energy. This is used to reduce ADP to ATP, NADP plus to NADPH. The whole scheme of transfer of electron is called Z scheme due to its shape. The photolysis of water releases electron that provide electron to photosystem 2. Oxygen is also released during this process. Oxygen is also released in this process. Difference between the cyclic and non-cyclic phosphorylation. Both photosystems are functional. साइक्लिंग एंड नॉन साइक्लिक phosphorylation में क्या अंतर है? Both photosystems are functional in sequence. In non-cyclic photophosphorylation, PS1 first, PS2 first, then PS1. ATP and NADPH plus H plus are synthesized. Takes place in membrane or lamella of grana or membrane और लेमिला ऑफ ग्राना के लेमिला में और ग्राना के मेम्ब्रेन में. नॉन साइक्लिक कहाँ कहाँ होता है? मेम्ब्रेन और लेमिले ऑफ ग्राना. सिंपल सी बात है. ओनली फोटोसिस्टम 1 इज फंक्शनल इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. अगर वेवलेंथ ज्यादा होती है तो एनर्जी कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है. तो फोटो सिस्टम 2 में ज्यादा एनर्जी लगेगी एज कंपेयर टू फोटो सिस्टम 1. डाउनहिल ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स का. सबसे पहले ऑक्सीजन टूटता है, फिर फोटो सिस्टम 2 पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. फिर उसके बाद डाउनहिल जाते हैं 700 नैनोमीटर पे, जो और कम एनर्जी वाला होता है, तो और डाउनहिल जाते हैं. उससे एडीपी से एटीपी बनता है, एनएडीपी से एनएडीपीएच बनता है. नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है? दोनों सिस्टम एक्टिवेट होते हैं, PS2 एंड PS1. एटीपी एंड एनएडीपीएच प्लस H प्लस का बनता है. उसमें जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन एंड लेमिला ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ ग्रेना और लेमिला ऑफ ग्रेना, दोनों में ये रिएक्शन होती है. ओनली PS1 इज फंक्शनल इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन.
Only ATP is synthesized, not NADPH plus H plus take place in stromal lamella. In stromal lamella, both PS2 and NADPH reductase enzymes are absent. In stromal lamella, both PS2 photosynthesis 2 and NADP reductase are absent. NADP नहीं बनता है यार साइक्लिक में NADP नहीं बनता है, साइक्लिक में NADP नहीं बनता है, साइक्लिक में फोटोसिस्टम 2 नहीं होता है, और साइक्लिक में NADP रिडक्टेज नहीं होगा, क्योंकि ये स्ट्रोमा लेमिला में होती है। तो स्ट्रोमा लेमिला में ये तीन चीजें नहीं हो सकती। स्ट्रोमा लेमिला में क्या क्या नहीं होगा? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अगर स्ट्रोमा लेमिला में होगा तो उधर PS2 नहीं होगा, क्योंकि PS2 इन्वॉल्व नहीं होता है, और वहां पे NADP नहीं बनता, NADP से NADPH नहीं बनता है, बिकॉज NADPH रिडक्टेज उसमें प्रेजेंट नहीं होता है। देन आवर आंसर विल गो डेफिनेटली द ऑप्शन in granular amila presence of which of the following specifies that Z scheme found only in granular amila। Z scheme कौन सी? cyclic phosphorylation is known as Z scheme, not the other one। जैसे जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है उसका जो डायग्राम बनता है कुछ Z की तरह बनता है, Z जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज नॉट Z scheme। इस क्वेश्चन को हार्ड कंसीडर किया जाता है कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड है। सिंगल सेल प्रोटीन पे क्वेश्चन आ गया भाई। अब रिच सोर्स ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन सिंगल सेल प्रोटीन सबसे ज्यादा कहां पर मिलता है यार? सिंपल सा आंसर है यार, स्पिरुलिन है सिंगल सेल। OMG, I was wrong this time। सिंगल सेल प्रोटीन में स्पिरुलिना आता ही नहीं है भाई। हाँ, स्पेस फूड में आता है ना स्पिरुलिना, तो मेथाइलोफिलस एंड मिथाइलोट्रोपस सिंगल सेल प्रोटीन में आता है। मेथाइलोफिलस एंड मिथाइलोट्रोपस, मिथाइलोफिलस एंड मिथाइलोट्रोपस। और इसको कौन सा इजी में कंसिडर किया जाता है यार? इजी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं यार, क्या मतलब। चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट डे है आज, तो मैं अनुमान लगा के चल रहा हूँ कि 90 में से लगभग 45 क्वेश्चन मेरे गलत जाएंगे, तब भी मैं पॉजिटिव रहूँगा, मोटिवेटेड रहूँगा, क्योंकि मेरे को पता है यार इतना दिनों बाद मैं चू रहा हूँ यार किताबें। पहले दिन ही तो नहीं आंसर सही आने लगेंगे ना। I have to study for that। इसके लिए पहले ये तो पढ़ लें पूरा। The photosynthesis, the use of energy of sunlight by plant for doing the photosynthesis is the basis of the life on earth। The photosynthesis is important because it is primary source of all foods on the earth, responsible for release of oxygen into the atmosphere by green plants। Variegated leaf experiment showed showed that the photosynthesis occurred only in the green part of the leaf in the presence of light। Half leaf experiment by Moll showed that CO2 is required for photosynthesis। Half leaf experiment showed the CO2 is required for photosynthesis, and variegated leaf experiment showed that only green part can do photosynthesis। Only green part can do photosynthesis, that is shown by variegated leaf experiment।
And CO2 is important as half leaf experiment. Half leaf experiment, CO2 is important. Variegated leaf experiment, green part is important. So early experiments like in 17th century, the experiments began on photosynthesis. Like Joseph Priestley was one of the scientists in that era. Revealed the role of air. जोसेफ प्रीस्टली ने क्या बोला, एयर जरूरी है. जैन इंगनहूस इंजनहूस कैसा है, सनलाइट को डिस्कवर किया इन्होंने. सनलाइट इज इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शोड दैट ओनली ग्रीन पार्ट कैन डू फोटोसिंथेसिस. अब देखो, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट बाय मॉल, इसने बताया था CO2 इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए. वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या पता लगा था कि ग्रीन पार्ट में ही फोटोसिंथेसिस होता है. और जोसेफ प्रिस्टली ने क्या बताया था, एयर जरूरी है. और जैन इंगनहाउस, पता नहीं कैसा नाम है साइंटिस्ट साहब, तो इन्होंने बताया था कि सनलाइट जरूरी है और ग्रीन पार्ट में सनलाइट जरूरी है. सनलाइट जरूरी है प्लस ग्रीन पार्ट में सनलाइट जरूरी है. तो जूलियस वॉन सैक इन्होंने बताया कि ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है प्लांट ड्यूरिंग द ग्रोथ. T.W. Engelmann cladophora and place it in suspension of the aerobic bacteria. Role of bacteria was to detect oxygen. क्लेडोफोरा वाला एक्सपेरिमेंट किसने किया था भाई, T.W. एंगलमैन में. 18th सेंचुरी में इतना दिमाग था यार इनके पास. मतलब 18th सेंचुरी में ये लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे थे. He found that the bacteria accumulated mainly in the blue or red light. भाई साहब ये स्पेक्ट्रम वगैरह वाला काम T.W. एंगलमैन साहब ने कर दिया था 1843 में. क्लेडोफोरा वाला एक्सपेरिमेंट किया था. क्लेडोफोरा लिया, क्लेडोफोरा के आसपास बैक्टीरिया डाल दिया. और बैक्टीरिया तो वहीं सरवाइव कर पाएगा ना जहां पर ऑक्सीजन है. तो ऑक्सीजन तो वही पार्ट दे पाएगा जिसमें फोटोसिंथेसिस है. और फोटोसिंथेसिस वही कर पाएगा जिसमें जो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है. तो कैसे इन्होंने मतलब ये दिमाग लगाया, बैक्टीरिया को डाला तो बैक्टीरिया उसी जगह पर जाएगा जहां पर ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन वहीं जाएगी जहां पर फोटोसिंथेसिस हो रही है. और फोटोसिंथेसिस वहीं होगी जहां पर लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट. तो लाइट कौन कौन सी एब्जॉर्ब कर रहा था, ब्लू एंड रेड लाइट एब्जॉर्ब कर रहा था. Absorption spectra of the chlorophyll A and B. First section spectrum of the photosynthesis revealed and resembles roughly the absorption spectra of chlorophyll A and B. Cornelius van Niel, a microbiologist, showed that the photosynthesis is essential for the light-dependent reaction in which hydrogen from a suitable oxidizing compound कितना मतलब लीनियर रिलेशन है ना. जोसेफ प्रीस्टली ने एयर का बता दिया, एयर चाहिए प्लांट को. जैन इंगनहूस ने बता दिया कि यार सनलाइट चाहिए और ग्रीन पार्ट में ही चाहिए. जूलियस वॉनसैक ने बता दिया यार ग्लूकोज बनाता है ये ग्रोथ के टाइम पे. T.W. एंगलमैन ने बताया कि यार क्लेडोफोरा एक प्लांट है, उसको लो
उसके अगल बगल बैक्टीरिया छोड़ दो, उसके अगल बगल जब बैक्टीरिया छोड़ दिए तब बैक्टीरिया ग्रो कहां पर करेगा? तो बैक्टीरिया ग्रो, देखो क्लेडोफोरा लिया, प्लांट है, उसके अगल बगल बैक्टीरिया छोड़ दिए, तो बैक्टीरिया छोड़ दिए तो बैक्टीरिया कहाँ ग्रो करेंगे? जहां पर ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन कहाँ आएगी? जहां पर फोटोसिंथेसिस हो रही है। और फोटोसिंथेसिस कहाँ होगी? जहां पर हमारे पास यहाँ पर जो प्लांट है लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। जब लाइट वो एब्जॉर्ब करेगा तो फोटोसिंथेसिस होगी। तो लाइट कौन कौन सी एब्जॉर्ब की थी? रेड और ब्लू। तो वही जो एक्शन स्पेक्ट्रम है that resembles the absorption spectra of the chlorophyll A and B, hence proved। T.W. इंगलमैन ने ये प्रूव कर दिया। और उसके बाद कॉर्नेलियस वॉन नील आते हैं, ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने बायोकेमिस्ट वाली चीज कर दी यार। माइक्रोबायोलॉजिस्ट था ये बंदा और इसने बायोकेमिस्ट वाली चीज कर दी। इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड जो कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट में, वो खोज निकाला। यार, showed that photosynthesis is essentially a light dependent reaction in which the hydrogen from the suitable oxidizing compound reduces कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन डाइऑक्साइड से ही कार्बोहाइड्रेट बनता है। प्लांट में कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो रिड्यूस कर देता है कार्बोहाइड्रेट को, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में। 5 साइंटिस्ट आए, फटाफट याद कर लो 5 साइंटिस्ट को। जोसेफ प्रिस्टली ऑक्सीजन, जैन इंगनहूस सनलाइट और ग्रीन पार्ट पर सनलाइट। जूलियस मॉन्सैक क्या बताया कि ग्लूकोज निकलता है जब ग्रोथ होती है। टी.डब्ल्यू. इंगलमैन क्या बताया? क्लेडोफोरा के आसपास बैक्टीरिया रख दिए। बैक्टीरिया कहाँ ग्रो किए? जहां पर रेड और ब्लू लाइट पड़ रही थी। एक्शन स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से मिलता है किसके? क्लोरोफिल ए एंड बी के। कॉर्नेलियस वॉन नील ने क्या बोल दिया? माइक्रोबायोलॉजिस्ट था पर उसने बायोकेमिस्ट वाला काम कर दिया। CO2 को कार्बोहाइड्रेट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कौन रिड्यूस करता है, वो बता दिया। चलिए 5 साइंटिस्ट हो गए, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। Where does the photosynthesis take place? The site of photosynthesis chloroplast aligns themselves along the walls of the mesophyll cells। जो mesophyll cells होते हैं उसकी दीवारों पर क्लोरोफिल चिपका हुआ होता है। मेसोफिल सेल्स की दीवारों पे क्लोरोफिल चिपका होता है सच दैट दे गेट द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ इंसिडेंट सनलाइट। अच्छा ठीक है, अगर आपको सनलाइट चाहिए होती है तो कहाँ पर जाते हो? आपको सनलाइट चाहिए होती है तो आप खिड़की पे जाते हो, छत पे जाते हो। तो वैसे ही अगर किसी को सनलाइट चाहिए प्लांट में तो वो मेसोफिल सेल की जो है वो वॉल पे आके चिपक जाएगा, तो उसको सनलाइट मैक्सिमम से मैक्सिमम मिल जाएगी। ठीक है, मेसोफिल सेल के अंदर क्या होते हैं? हमारे क्लोरोप्लास्ट्स, such that they get optimum quantity of incident sunlight। Rate of photosynthesis is independent of duration of light। The percentage of light utilized by the synthesis of photosynthesis for the percentage of light energy utilized for the synthesis of photosynthesis by higher plants is 1 to 2%। पूरी सनलाइट की 1 to 2% सनलाइट ही प्लांट्स यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। Light reaction, the membrane system of the chloroplast is responsible for trapping the light energy and also the synthesis of ATP and NADPH। The stroma enzymatic reaction incorporates CO2 into the plant leading to the synthesis of sugar which in turn forms starch। अच्छा, डार्क रिएक्शन से शुगर बनती है और लाइट रिएक्शन से क्या बनती है? एनर्जी। लाइट रिएक्शन से एनर्जी बनती है
और डार्क रिएक्शन से क्या बनती है? शुगर। लाइट रिएक्शन से एनर्जी, डार्क रिएक्शन से शुगर। लाइट रिएक्शन से एनर्जी और डार्क रिएक्शन से शुगर बनती है, ये याद रखना पड़ेगा। एनर्जी क्या है? एनएडीपी और एटीपी। और शुगर क्या है हमारे पास? CO2 से शुगर बनती है, रिड्यूस होके। ठीक है। और यहाँ पर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीफ पिगमेंट्स। लीफ में पिगमेंट कौन कौन से होते हैं? पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक ऑफ सेपरेट आउट द क्लोरोफिल लीफ पिगमेंट फ्रॉम द plants. The chlorophyll A, bright and blue green in the chromogram. बर्न आउट होने की स्थिति आ जाती है बढ़ते बढ़ते बंदा। burnout 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 light reaction, photochemical phase, H2O split, light absorption, splitting of water molecules releases the oxygen molecules, formation of high energy chemical intermediates like ATP and NADPH. लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन रिलीज होती है, H2O स्प्लिट होता है, लाइट एब्जॉर्ब होती है, ATP और NADPH एनर्जी बनती है। द पिगमेंट ऑफ आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू द टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल The pigments are organized into the two discrete photochemical harvesting light harvesting system LHC within the photosystem 1 and photosystem 2. The pigments are arranged in discrete photochemical lights harvesting complexes. The LHC are made up of the hundreds of pigments molecules containing the pigments except single chlorophyll A molecule in each photosystems. LHC are made up of the hundreds of pigments molecules. LHC are made up of hundred of pigment molecules containing the pigment except the single chlorophyll A. LHC are made up of hundreds of pigments. अच्छा, पिगमेंट तो बहुत ज्यादा होते हैं। लेट्स सी आर मेड अप ऑफ हंड्रेड ऑफ पिगमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग ऑल पिगमेंट्स एक्सेप्ट सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स इन ईच फोटोसिस्टम। अच्छा, फोटोसिस्टम में क्लोरोफिल ए सिर्फ एक होता है भाई साहब। वैल्यू देखो क्लोरोफिल ए की। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक ऑफ फोटोसिस्टम 1 is 700 nanometer. Wavelength of red light. Maximum absorption peak of photosystem 2 is 680 nanometer. High energy wavelength of red light. Maximum absorption peak. द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो हमने पढ़ ही लिया है। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक भी हमने पढ़ ही लिया है। उसके बाद केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ लेते हैं थोड़ा। एटीपी इज लिंक्ड टू डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। अच्छा भाई, और बताओ। अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड एंड द माइटोकॉन्ड्रिया। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस यार कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाने वाली हाइपोथेसिस। एटीपी सिंथेसिस इज लिंक्ड विद डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड एंड माइटोकॉन्ड्रिया। When the protons in the stroma decrease in number, while the lumen, while in the lumen there is accumulation of protons, the proton gradient formed resulting in decrease in pH in the lumen. Chemiosmosis requires a membrane
अ प्रोटॉन पंप, अ प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड एटीपीएज एंजाइम। मतलब चार चीजें बहुत जरूरी है केमियोस्मोसिस होने के लिए। मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड एटीपीएज एंजाइम। एटीपीएज एंजाइम के बिना तो होने वाला है ही नहीं। और हमारे पास ये जो सी एफ नॉट जो होता है हमारे पास इज प्रेजेंट ऑन द थायरोइड मेम्ब्रेन एंड फॉर्म्स अ ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल दैट कैरीज अ मेम्ब्रेन, अ प्रोटीन पंप, Calvin cycle, the stages of Calvin cycle: carboxylation, reduction, and regeneration. Three stages of Calvin cycle. थ्री स्टेजेस ऑफ कैल्विन साइकिल। चार चीजें चाहिए केमियोस्मोसिस के लिए: मेम्ब्रेन, प्रोटीन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड एटीपीएस। एटीपीएस में क्या क्या आता है? सी एफ नॉट एंड सी एफ वन। सी एफ नॉट क्या होता है? अंदर होता है, सी एफ नॉट बाहर होता है थाइलाकॉइड के। ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल होता है सी एफ नॉट, और ये पंप को काम करता है। कैल्विन साइकिल में तीन स्टेजेस होते हैं: कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन में कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन कैल्विन साइकिल की तीन स्टेजेस होती हैं। For every CO2 molecules entering the Kelvin cycle, 3 molecules of ATP and 2 molecules of NADPH are required. For every CO2 molecule entering the Kelvin cycle, 3 molecules of ATP and मतलब कुल मिला के 5 मॉलिक्यूल्स चाहिए इसको। तीन एटीपी और 2 NADPH। वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 6 टर्न्स ऑफ द साइकिल इज नेटेड। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के लिए 6 साइकिल्स चाहिए। एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 केल्विन साइकिल लगेंगे। एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 केल्विन साइकिल लगेंगे। मतलब एटीपी कितने लगेंगे कौन कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? 3 इंटू 6 18 एटीपी लगेंगे। और एनएडीपीएच कितने लगेंगे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? 6 इंटू 2 12 एटीपी लगेंगे। कैलकुलेट हो गए। 12 एनएडीपीएच एंड 18 एडीपी, एटीपी। Hatch and slack cycle. Hatch and slack cycle pathway. The primary CO2 acceptor three carbon molecule PEP, phosphoenol pyruvate, are present in the mesophyll cell. The enzyme responsible for fixation of PEP carboxylase is peptidase enzyme. The bundle sheath cells are rich in enzyme ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase, रूबिस को भी जिसको कहते हैं, बट लैक पेप्केज एंजाइम बंडल शीट सेल का बता रहा है सिस्टम।
C4 प्लांट, C3 प्लांट, C4 प्लांट का तो दे रखा है, C3 प्लांट का नहीं रखा है यार। C4 plants, xerophytic conditions. Xerophytic conditions. Xerophytic conditions. ड्राई एंड हॉट कंडीशन में होगा। मेज एंड सॉर्गम, मक्का और सॉर्गम। बंडल शीट सेल्स। अब देखो यहाँ पर दो सेल्स का जिक्र आया है हमारे पास, मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल्स एंड बंडल शीट सेल्स। बंडल शीट सेल्स में क्या होता है भाई? बंडल शीट सेल में क्या होता है भाई? रुबिस्को। मीजोफिल सेल में क्या होता है? पेप्केज। बंडल शीट में क्या होता है? रुबिस्को। मीजोफिल में क्या होता है? पेप्केज। बंडल शीट में क्या? रुबिस्को। मीजोफिल में क्या? पेप्केज। The special leaf anatomy known as Cron's anatomy is present in C4 plant. Cron's anatomy is present in C4 plants. रेथ इकोनॉमी जी भी जिसको बोलते हैं, रीथ इकोनॉमी, रेथ। हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं। लैक फोटो रेस्पायरेशन प्रोसेस। अच्छा, इसमें फोटो रेस्पायरेशन होता ही नहीं है, बताओ। इसीलिए तो इसको एफिशिएंट साइकिल बोलते हैं कभी कभी। लैक्स फोटो रेस्पायरेशन लीड्स टू ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास। लार्ज वेस्कुलर बंडल्स नोन एज बंडल शीट सेल्स। Large vascular bundles, bundle sheet cells possesses large number of chloroplast, thick cell wall, impervious to gas exchange, and no intercellular spaces. This is interesting यार। मतलब कहाँ, मतलब इनएफिशिएंट प्लांट्स, अब कहाँ एफिशिएंट प्लांट्स। मक्का और सोगम। Lack respiration, photorespiration is less productive way of photosynthesis, leads to greater productivity of biomass. Large vascular bundle known as bundle sheet cells. Bundle sheet cells are characteristic feature of C4 plants, and bundle sheet cells have Rubisco enzyme, and they have Cron's anatomy too. C4 plants have Cron's anatomy in leaf. In leaf, it has to be remember that they talk about leaf. Whenever it comes to Cron's anatomy, they are talking about leaves only. Possesses large number of chloroplasts, thick wall, impervious to gas exchange, no intercellular space. Presence of the bundle sheet helps in identification. Okay, the bundle sheet cell is characteristic feature of C4 plants that you can identify. If a plant have bundle sheet cells, you can identify that plant as a C4 plant undoubtedly. Undoubtedly, you can identify plant as a C4 plant if it has a Cron's anatomy and bundle sheet cells. The two things. Okay, what is photorespiration? The less efficient way of photosynthesis is photorespiration.
Photorespiration only occurs in C3 plants because they can be less efficient, but C4 must have efficiency because they are already in desert. Already in desert. Rubisco has much greater affinity to CO2 than oxygen. So RUBB binds with O2 instead of binding with PGA, leads to formation of one molecule of phosphoglycerate and phosphoglycolate in a pathway called photorespiration. RUBP instead of binding with O2, Club Robisco has more affinity towards CO2. It doesn't have more affinity towards oxygen, so it binds generally with PGA, leads to formation of one molecule of phosphoglycerate and phosphoglycolate. It is the process in which there is no formation of ATP and NADPH. Okay, so photorespiration is a less efficient plus non-productive process. Again, we don't have any ATP after photorespiration, but it utilizes and releases CO2. It is only harming. It is not. It is wasteful process. As the NCRT writes, it is a wasteful process. It gives out CO2 and takes ATP. It doesn't provide ATP and doesn't provide oxygen. Now the difference between the C4 and C3 plants. C3 plants for photosynthesis occur in mesophyll cells. The photosynthesis occur in mesophyll and bundle sheath cells in C4 plants. Okay. The interchange is happening simultaneously in C4, but in C3 it's only about the mesophyll cells. Okay, it doesn't have Cron's anatomy, the efficient one. It is in C4 plants only. In C3 plants, we have photorespiration. Photorespiration can only occur in C3 plant, only in C3 plant. While in C4 plants, they are already in desert, so they cannot afford photorespiration. They cannot afford any wasteful process. Okay, RUBP is the first acceptor, so this is the most important line of difference. RUBP is first acceptor. This is asked multiple times again in NEET. PAP is the first CO2 acceptor. What is PAP? Phosphoenol pyruvate. And what is RUBP? Ribulose bisphosphate. PGA is first stable product. Again, the important line. PGA is first stable product in C3 plants. But in case of C4 plants, the first stable product we will talk about is OAA, oxaloacetic acid. The plant adapted all the climates. Plants are adapted to all the climates. Mesophyll cells are performed complete photosynthesis. Plants are adapted to xerophytic climate only, xerophytic conditions only, and mesophyll cells perform initial fixation. Mesophyll cells perform initial fixation only. Xerophytic condition and initial fixation only. Okay. So now we have the last topic of this chapter is factor affecting photosynthesis.
Blackman's law of limiting factor. The rate of photosynthesis is very important in determining the yield of the plant, including the crop plants. It is affected by several factors, both internal and external. The plant factor, the number, size, age, interact, orientation of the leaves, mesophyll cells, chloroplasts, CO2 concentration, the amount of chlorophyll. Plant factors are those, and external factor like light, temperature, CO2 concentration, and water. The Blackman law of limiting factor. If the chemical process is affected by more than one factor, then rate will be determined by the factor which is nearest to its minimal value. It is the factor by which directly affects the process if the quantity is changed. Light. It is the rarely a limiting factor because it's available everywhere. Light saturation occurs at 10% of full sunlight. Increase in the incident light beyond the point may break down the chlorophyll and decrease the photosynthesis. Concentration of CO2 is a major limiting factor. CO2 concentration is a major limiting factor for the photosynthesis. Increase in concentration of up to 0.5%. 0.05% can cause increase in CO2 fixation rate beyond the levels become damaging over longer periods. Okay, so greenhouse effect by CO2 and the greenhouse effect by increasing carbon dioxide emission can cause harm to the photosynthesis level of the plant. Increase in concentration up to 0.5% can cause an increase in CO2 fixation rates beyond the levels can become damaging over the long period of time. C4 plants can show saturation about 360. Temperature, great productivity, C4, but C3 can be damaged easily in high temperature. Damage. Great productivity in high temperature and C3 can be damaged. Indirect effect of the photosynthesis. Stomata close, reduce in water availability. Water stress causes the stomata to close. किसी भी पौधे में अगर ज्यादा पानी डालते हैं तो उसके स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं. अगर स्टोमेटा क्लोज होंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, CO2 की अवेलेबिलिटी प्लांट के अंदर कम हो जाएगी. प्लांट के अंदर CO2 जाना कम हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस कम होगा. अगेन फिर एनर्जी कम बनेगी. वही वही सारा काम होगा. ओके, सो वी आर डन विद फोटोसिंथेसिस.
Okay, we are done with this chapter. Photosynthesis is over. Now we can move to respiration. Respiration is the exothermic process lead to unlocking of energy. Photosynthesis are plants are aerobic organisms, which means they require the presence of molecular oxygen. Breaking of CC bond complex compounds the amount of energy is called the respiration. The compounds that are oxidized during the respiration are known as respiratory substrates. Okay, guys, I have to take some sort of break. I'm like done with the 4 or 5 chapters. अब ब्रेक लेते हैं लगभग 10 मिनट्स का. क्या करेंगे इस ब्रेक में? लस्सी वस्सी पियेंगे या फिर चाय वाय पियेंगे या फिर कुछ टहल वहल के आते हैं, थोड़ा जंपिंग जैक्स कर लेते हैं ताकि दोबारा कंसंट्रेशन बन पाए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी. बर्नआउट्स आर रियल गाइस, बर्नआउट हो जाता है आदमी. चलिए चलते हैं.
I'm back, buddy. 10 मिनट्स का ब्रेक कैसे हो जाता है 20 मिनट का, पता ही नहीं लगता है। चाय भी आ गई अपनी। फटाफट से रिवाइज करते हैं जो भी पढ़ा है आज, फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टास्क की तरफ।
फटाफट कम टाइम रह गया है, फटाफट पढ़ रहे हैं. According to WHO, reproductive health means the total well-being of all the aspects of reproductive, physical, emotional, and social behavioral. Reproductive health family planning initiated in 1951. India was among the few first countries to implement the such action plan. India was among the first countries, मतलब इंडिया सबसे पहले एक्शन प्लान जिसने एग्जीक्यूट किया वो 1951 में इंडिया ही था. ठीक है. मेजर टास्क ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ चाइल्ड केयर programs RCH to aware about the reproduction related aspects, provides facilities to support create a productively healthy society. Aims of need of sex education in schools: to provide information about sex related aspects, to avoid sex related myths and misconceptions, proper information about the reproductive organs, adolescence and related changes, safe and hygienic sexual practices, sexually transmitted diseases and AIDS, etc. Population stabilization एंड बर्थ कंट्रोल. 1900 में अराउंड 2 बिलियन की पॉपुलेशन थी पूरे इंडिया में. ठीक है. और 2000 आते आते 6 बिलियन हो गई, मतलब सीधा 3 गुना ज़्यादा हो गया. और 2011 आते आते 7.2 बिलियन हो गई. 2 बिलियन से 6 बिलियन 100 साल में, फिर 11 साल में सीधा 1.2 बिलियन जंप. वर्ल्ड पॉपुलेशन 2 बिलियन टू 6 बिलियन एंड देन 7.2 बिलियन. देन इंडिया में क्या था, 350 मिलियन. 2000 तक 1 बिलियन क्रॉस कर गया. 2011 में 0.2 बिलियन. अब नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं. नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव: पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, कोइटस इंटरप्टस, lactational amenorrhea. Avoid coitus from 10th to 17th of menstrual cycle fertile period to prevent contraception. Change of fertilization: according to 2011 census, the population growth was less than 2%. Reason of population explosion: increase in health facilities and better living conditions, the rapid decline in death rate, maternal mortality rate and infant mortality rate, increase in number of people in reproducible age, impact of population explosion: scarcity of basic requirements, food, shelter and clothing. Thus strict measures must be taken to control the population. Control measures: motivate the smaller families by using contraceptive methods to avoid unwanted pregnancies. Aware people about the slogans हम दो हमारे दो, we two and our two. Many couples have adopted one child policy norm. Providing incentives to the couple with small families is important. Statutory
raising of marriageable age of females 18 years and males 21 years, मतलब 18 साल की लड़कियों 18 साल से पहले लड़कियों की शादी नहीं करनी और 21 साल से पहले लड़कों की शादी नहीं करनी. दिस इज ऑल्सो अ मेथड. फीचर्स ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली यूजेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए एंड रिवर्सिबल, मतलब एडिक्शन नहीं होना चाहिए उस चीज का. लीस्ट साइड इफेक्ट होना चाहिए या फिर कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट इंटरफेयर द सेक्सुअल ड्राइव एंड सेक्सुअल एक्ट, मतलब उसमें इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, कम से कम इंटरफेरेंस होना चाहिए उस चीज में. बैरियर मेथड. फर्स्ट था नेचुरल मेथड. नेचुरल मेथड में कौन कौन सा था? पीरियोडिक एब्सटिनेंस एंड देन क्वाइटस इंटरप्टस, लैक्टेशनल एमेनोरिया. और बैरियर मेथड में कौन कौन से मेथड है? दो ही मेथड है, कॉन्डम्स एंड डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स. नाउ कमिंग ऑन टू condoms, they are made up of rubber latex sheath. They are used to cover penis and vagina and cervix just before the coitus. Semen would not enter the female reproductive tract. ये तो understood ही है. Diaphragms, cervical caps and walls made up of rubber that fit over the cervix and is used in conjunction with the spermicidal creams. Yes, spermicidal creams are very important here. They are creams used on the surface just to kill the sperms. Jellies and foams. They block the entry of sperm through the cervix and they are reusable. IUDs, intrauterine devices. Intrauterine devices, they are effective and popular. They are inserted by the doctors and expert nurses. So be sure about it. Okay. Think twice before installation of IUDs. नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज लिपिड. यार इसके एग्जांपल्स बहुत आते हैं यार, इसके एग्जांपल्स डायरेक्टली उठ के पूछे जाते हैं. नॉन मेडिकेटेड में मैच द फॉलोइंग दे देंगे, नॉन मेडिकेटेड में लिपेलूप्स को मैच करना है, और कॉपर आईयूडीज में CUT CU7 मल्टीलोड 375. हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज में आपको पता ही लग जाएगा, उसमें हार्मोन का नाम होगा ना, प्रोजेस्टेरोन जैसा नाम है, प्रोजेस्टेरेट. ठीक है. LNG20. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा इसका? द यूट्रस मेक्स द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग एंड द सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म्स. सर्विक्स को इतना होस्टाइल कर देता है, मतलब उसके लिए स्पर्म के लिए कंडीशंस बिल्कुल खराब कर देता है ये वहां पर सर्विक्स में. एंड देन जो यूट्रस है उसको बिल्कुल ऐसा अनबेरेबल कर देता है, अनसुटेबल कर देता है इम्प्लांटेशन के लिए, वहां पे इम्प्लांटेशन हो ही नहीं पाता है. आईयूडीज इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स. कॉपर आयन सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ. अच्छा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देखो कॉपर क्या एक्शन क्या करता है, कॉपर वाली वो जो थी ना आईयूडीज, CUT CU7 मल्टीलोड 375, ये तीन जो आईयूडीज हैं, ये इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हैं, ये क्या करते हैं? जो स्पर्म है उसकी मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं. कॉपर आयन क्या करता है? स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करता है एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी घटा देता है कॉपर इन द सर्विक्स. IUD is ideal contraceptives for the female who want to delay the pregnancy or space children. ऐसा बोला जाता है ना कि अगला बच्चा 3 साल बाद, तो 3 साल बाद जिनको बच्चा चाहिए तो वो बीच में ना मतलब IUDs का यूज कर सकते हैं for the time being when they don't want a kid. Oral contraceptives. Oral administration of small doses of progesterones or pills, 21 days pills. Form a tablet. Pills are taken daily, मतलब डेली खानी होती है 21 days.
starting with the first 5 days of menstrual cycle. menstrual cycle जब स्टार्ट होता है, जब फ्लो स्टार्ट होता है, तब 5 दिन के अंदर अंदर स्टार्ट करनी होती है, 21 दिन तक लगातार खानी होती है. After 7 days gap during which the menstrual cycle occurs, it has been repeated in the same pattern till the female desires to prevent contraception. अच्छा, जब भी menstrual cycle होगा तब ये pills रोक देनी है. जब menstrual cycle नहीं होगा तब ये pills start कर देनी है. ठीक है, जब end होगा menstrual cycle का, ये तब कब तक खानी है? जब तक डिजायर्ड है, जब तक बेबी नहीं चाहिए, और जब चाहिए तब आप इसको बंद कर सकते हैं. लेकिन these pills comes with lots of side effects. Progesterone is not gonna be easy to take because it comes with lots of side effects. Maybe the woman will not be able to conceive in future also due to some hormonal issues going on in the body. Saheli pills, again very famous. Pills are very effective with less side effects, are accepted by the females. Saheli pills. Now the oral contraceptive for the females. It contains non-steroidal preparation. Again this thing, non-steroidal. It is the most important thing because steroidal contraceptives must not be used because artificial steroid can cause a hefty damage to our body. Developed by CDRI, Central Drug Research Institute. Once a week, Saheli can be taken by a woman once a week. With it has very few side effects. Now ये complete कर लिया हमने. IUDs we completed. Oral contraceptives we completed. IUDs have 3 parts: non-medicated, lipid loops, medicated. That can be copper ions. Okay. CUT, CU7 multiload 375 and hormonal progesterone LNG 20. Mechanism unsuitable कर देती है. Oral contraceptives 21-day pill. Saheli once a week pill. ठीक है. उसके बाद injectables progesterone alone or in combination with estrogen are used by the females as injections or implants under skin. स्किन के अंदर ये इम्प्लांट्स लगते हैं. ये ना मतलब एक पूरा ना जैसे एक ना पैकेज होता है, जैसे ना वो पैकेज ऑफ प्रोजेस्टेरोन इधर इंसर्ट कर दिया जाता है. वो धीरे धीरे बॉडी में घुलता रहता है. ठीक है, तो इसलिए उसको अंडर स्किन इम्प्लांट कर दिया जाता है. द मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू द पिल्स. Their effectiveness is much longer because they are implanted just beneath the skin na. Surgical methods include block gamete transport. To block gamete transport, but reversibility is poor in surgical methods. Medical termination of pregnancies, MTP. Now this is very simple chapter, but it comes with a lot of importance because anywhere near 2 to 3 questions are asked every year from this chapter only. Intervention or voluntary termination of pregnancy, full term, before full term is called MTP or induced abortion. 40 to 50 million MTPs are performed a year all over the world. Okay, this data is not important, I guess, although it is highlighted in the textbook. Because the emotional ethics, religions
ethical, religious, and social issues, many countries do not legalized MTP. Government of India legalized MTP in 1971 by Indira Gandhi with some strict conditions to check indiscriminate एंड इलीगल फीमेल फिटिसाइड्स. मतलब काफी ज्यादा ना, मतलब भ्रूण हत्या हो रही थी, जैसे छोटी छोटी बच्चियों को, लड़कियों को मार दिया जाता था. उसको ध्यान में रख के उसके लिए अलग क्लॉज बीच में डाल दिया गया था कानून के बीच में अलग क्लॉज डाल के उसके बाद एमटीपी को लीगलाइज कर दिया गया था 1971 में. An abortion may be spontaneous, naturally occurring, or miscarriages. Importance of MTP: to avoid unwanted pregnancy due to casual intercourse. MTPs are safe. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेफ कब होंगी MTPs. MTP सेफ कब होती है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में up to 12 weeks. First trimester up to 12 weeks. First trimester have 12 weeks. 3 months, 12 weeks. Problems related with MTPs. Majority of MTPs are performed illegally by unqualified quacks. Yes. Jhola chap doctor come in the play right here. Majority of medical termination of pregnancies are performed illegally by unqualified quacks. NCRT is writing that. Misuse of amniocentesis. The fetal sex determination based on the chromosomal pattern of the amniotic fluid. Yes, the amniotic fluid in which the baby resides in the womb is tested, and the chromosome pattern is also analyzed to get information about the sex of the child or a fetus. We can say fetus. Fetus is more accurate because it is in the womb. Okay, if the female fetus is female, it is followed by MTP. Such practices are dangerous for young mother and fetus. If the mother is young, then feticide can be dangerous. If let's say it is less than 18 years, less than 19, even less than, in some case less than 20 years of women can even face troubles going through the MTP. STI, sexually transmitted diseases, infections. Okay, disease or infection transmitted through the sexual intercourse called the STD. Venereal diseases. If you will get selected in the MBBS, in the second year onward, you will have a course of microbiology in which you have STDs explained. Hepatitis B and C. Like we have so many diseases to cover: gonorrhea, syphilis, genital herpes, chlamydiasis. Okay, chlamydiasis is the one disease which is not very accurately recalled by us. Genital warts, trichomoniasis, hepatitis B, HIV, leading to AIDS. Hepatitis B and HIV are also transmitted by sharing of injection needles, transfusion of bloods, mother to fetus, except hepatitis B. Genital herpes, HIV,
Other diseases can completely curable if detected on the early and treated properly. मतलब ये 3 डिजीजेस, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज और HIV, ये 3 को छोड़ के बाकी सारी जितनी भी है क्योरेबल होती हैं। ठीक है, ये 3 जानलेवा है। एक बार हो गई ना जिसको जिसको HIV, हेपेटाइटिस बी या फिर जेनाइटल हर्पीज जैसी बीमारी हो जाती है ना, डॉक्टर बोल देता है, लिख देता है कि भाई इतना देर और जिंदा रहोगे, बस दैट्स इट, बात खत्म है, खेल खत्म है। HIV हो जाता है फिर तो आराम से, मतलब गलती से भी अगर प्रिक भी लग जाती है तो बंदे को पता होता है कि भाई 5 साल बाद मरना है। अर्ली सिम्टम्स: ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग एटसेट्रा in the genital region. Absence of the less significant early symptoms and the social stigma deters the infected person to consult the doctor. This leads to the pelvic inflammatory disease, abortion, stillbirth. अब देखो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है स्टिल बर्थ, मतलब बच्चा, मतलब मरा हुआ पैदा हुआ बच्चा, ऐसी ऐसी चीजें हो सकती हैं। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, पेल्विक रीजन, किसी किसी का देखा होगा आपने, पेल्विक रीजन जो होता है बहुत ज्यादा सूजा हुआ होता है। एक तो नेचुरल होता है, एक तो ओवर सूजा हुआ होता है, उनको ये प्रॉब्लम होती है। ये एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। फर्टाइल इनफर्टिलिटी, कैंसर इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स, all persons are vulnerable to STDs. They are very high among the persons in the age group of 15 to 24 years of age. So इसका प्रिवेंशन क्या हो सकता है? Avoid sex with unknown partners. Obviously, use condoms, and in case of doubt, go to qualified doctor for early detection. It must be done. Infertility. Now let's talk about infertility. What is infertility? And we get lots and lots of question in previous year. So infertility, the inability of male or a female to produce the child in spite of unprotected sexual cohabitation. असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। अब कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, मैं बोल रहा हूं इसका स्कोप दुनिया में इतना बढ़ने वाला है ना, गायनेकोलॉजिकल फील्ड इज गोइंग टू बूम इन कमिंग टाइम, बिकॉज एवरीवन विल नीड इट। इतना ज्यादा जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो रहा है, लाइफस्टाइल इतना खराब हो रहा है, 24 घंटे हम लोग बैठे रहते हैं, and radiations, bad food habits, all of this leads to the inability of reproduction. तो यहां पर embryologist will earn the highest amount in coming time. So in vitro fertilization, IVF technology, the test tube baby, also known as test tube baby, ova collected from the wife donor from the sperm and induced to form a zygote. मतलब ओवा लिया और स्पर्म लिया, दोनों को कलेक्ट कर लिया और टेस्ट ट्यूब में फ्यूज करवाया, जाइगोट बनवा दिया। उसके बाद क्या किया, दिस इज फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। ओके, इन आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ओवा ले लिया हमने और स्पर्म ले लिया, स्पर्म एंड ओवा ले लिया, दोनों को एक टेस्ट ट्यूब में डाला, एक टेस्ट ट्यूब में डाल के दोनों को फर्टिलाइज करवाया। फर्टिलाइज करवाने के बाद हमने ट्रांसफर कर दिया टू द यूटेरस। zygote intrafallopian transfer. Okay, now in vitro fertilization is of two types, ZIFT and IUT. ZIFT is zygote intrafallopian transfer. Zygote intrafallopian transfer is transfer of zygote or early embryo within 8 blastomeres into the fallopian tube.
8 ब्लास्टोमियर्स। इस स्टेज पर अगर आप फेलोपियन ट्यूब में, इस 8 ब्लास्टोमियर स्टेज पे अगर फेलोपियन ट्यूब में डाला जा रहा है जाइगोट को, तो आप उसको जिफ्ट बोलोगे। 8, बार बार बोला करो, बार बार बोला करो। 8 ब्लास्टोमियर को अगर फेलोपियन ट्यूब में डाला तो जिफ्ट बोलेंगे। 8 ब्लास्टोमियर को फेलोपियन ट्यूब में डाला तो उसको जिफ्ट बोलेंगे। आईयूटी किसको बोलेंगे? ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स टू यूट्रस। अब 8 से ज्यादा ब्लास्टोमियर हो गए, उसको यूट्रस में डालना है, तो हम बोलेंगे आईयूटी। जिफ्ट इमेच्योर जाइगोट का होता है, और आईयूटी किसका होता है? मैच्योर जाइगोट का होता है। मोर देन 8 ब्लास्टोमियर जाइगोट इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू द यूटेरस, दैट इज कॉल्ड आईयूटी। एंड जिफ्ट अप टू 8 और 8 blastomere zygote is transferred into the fallopian tube, is called zift. Now next one is gift. Gift is gamete intrafallopian transfer. Now in gift, male sperm is enabled to go all the way from cervix to fallopian tube. So the male sperm is facilitated with some transport agents, and then it is transported to the fallopian tube, so it meets the ovum. When it meets the ovum, it fertilizes it, and hence the cycle starts. Intracytoplasmic sperm injection. Now the sperm is directly injected in the cytoplasm of ovum or egg. Artificial insemination technique. The semen is collected from the husband, healthy donor. Gamete intrafallopian transfer, ART. Legal adoption. Now we are done with so many chapters today. I think around 7 to 8 chapters are done only today in these 3 hours. These 3 hours, around 10 chapters are done today. So first is, now here I can mark the star. Reproductive health, it's done. Okay, I'm giving the star points to the chapters which are done. Okay, to keep a check on my progress report. Okay, now it's done. Photosynthesis is done. So many more things to do now. Now we are heading towards inorganic chemistry. So next live coming
is of inorganic chemistry. We will study inorganic chemistry there. We are done with 8 to 10 chapters of biology. 8 chapters very solid, and then 2 chapters not very solid, but 10 chapters are done of biology today. And now we are heading towards our next goal, which is inorganic chemistry. So see you guys there in inorganic chemistry. So keep sharing, commenting, and liking the live streams. Okay, so let's gather some experience which will be very amazing for further future use. So bye bye for this live.